Hare Krishna. So today we are having the first session, that is happiness on sale. Albert Einstein gives very interesting quotes. In one of his quote, he is saying that the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ इस कोर्स के बिगनिंग में, मैं टीचर नहीं हूँ, आप स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है? वी ऑल आर फ्रेंड्स हियर. वी आर जस्ट डिस्कसिंग गीता. I have heard something. I have heard from my gurus. I have read something in Gita. I am here to discuss with you, share with you. Okay. So be very kind, be very open mind. सोचना नहीं कि जज करेंगे, मैं बोलूंगा गलत हो गया तो क्या होगा, कोई इस तरीके का दिमाग में कंसेप्शन नहीं डेवलप करना है. जस्ट बी वेरी ओपन. ठीक है. हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस है सेशन में, तो सेशन के बीच में क्वेश्चन लेंगे तो फ्लो जो है वो टूट जाएगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, जस्ट राइट इन योर नोटपैड एंड आफ्टर द सेशन यू कैन आस्क. Okay, we'll have Q&A, time for Q&A for 10 minutes, and then you can ask. So here Albert Einstein is saying that curiosity has its own reason for existing. But आजकल हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, सही है ना? How many of us ask questions, especially when it comes to spiritual subject matter? Oh, good. So किसको पूछते हैं आप? मम्मी पापा को? Yeah, but आंसर्स मिलते हैं? मोस्टली नहीं मिलता है. Yes, that is a problem. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट आस्क क्वेश्चन. उसके पीछे कारण क्या है? पहला, पता है आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है. दूसरा, पीपल विल जज. अब भाई ये क्या पूछ रहा है, यू नो यू शुड आस्क कि यहाँ पे आने के बाद ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें. हाँ. या फिर घूमने कैसे जाएं, इंदौर कहाँ पे होगा, इंदौर कब जा सकते हैं घूमने. ये क्या पूछ रहा है, भगवान है कि नहीं है, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये क्या पूछ रहा है. यस. सो पीपल विल जज अस. एंड इसलिए आजकल क्लासरूम में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता, और सर पूछते हैं तो कोई आंसर भी नहीं करता. एंड इसलिए प्रोफेसर्स ने भी क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए थे. जो क्वेश्चन पूछने इनसे एग्जाम के टाइम पूछ लेंगे, क्लास में कुछ भी पूछो, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई. यस. सो पीपल विल जज अस, आवर आंसर में गेट रॉन्ग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so maybe we will not get the answer, and therefore we don't ask question. But curiosity has its own reason for existence. you know Albert Einstein, even in his old age, used to ask many questions. That is a sign of humility. We should always be having like childlike attitude, learning attitude. तब हम हमेशा ग्रो कर सकते हैं. बट जब हमारे अंदर ये थोड़ा सा भी आ जाता है ना, अभी मुझे पता है या मैं जानता हूँ, अंदर से पता है मैं नहीं जानता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं जानता हूँ, बस लर्निंग वहीं स्टॉप हो जाती है. उसके आगे हम फिर कुछ सीख नहीं पाते हैं. देयरफॉर वी नीड टू बी क्यूरियस. Okay, now relevancy of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is very relevant even today. First of all, Gita is not a religious book. It is a guide for the sincere spiritual seekers. It it starts from specifics, then it goes to the universal solutions, and then again comes back to the specific. How it happens, that we are going to discuss in the course. Gita is so popular in the world that सबसे ज्यादा कमेंटेड बुक है पूरी दुनिया में. 650 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं भगवत गीता के ऊपर. अलग अलग लोगों ने भगवत गीता के श्लोकों को ट्रांसलेट किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है. ऐसे 650 लोगों ने ट्राई किया है. दिस इज द मोस्ट कमेंटेड बुक इन द हिस्ट्री. बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लाइक महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, and reformers like Martin Luther King, they used to study Gita. Scientists like Oppenheimer, Albert Einstein, Sir Isaac Newton, they have read and tried to understood Gita. Oppenheimer went to the extreme. He was so much amazed by the wisdom of Gita कि वो संस्कृत ग्रामर स्टडी करने लगे. संस्कृत ग्रामर को स्टडी करने के लिए 12 साल लगता है. पाणिनि इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. But he took that journey also. Why? Just he wanted to understand Gita as it is. When first atom bomb was tested, he quoted from Gita, 11th chapter. Time destroys everything, where Krishna says in Bhagavad Gita. So he was very much enamored by the wisdom of Bhagavad Gita. Great scholars like Shankaracharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbarkacharya, Madhvacharya, all of them have give great importance to Bhagavad Gita. Shankaracharya says, if you want to have just one book, सिर्फ एक किताब आपको चाहिए जिसमें दुनिया का सारा नॉलेज है, सारा विजडम है, सारा एसेंस है, जस्ट हैव भगवद गीता विथ यू. जस्ट अ सेकंड, आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड दिस स्लाइड्स.
Sorry, I'm really sorry. All of you. I realized the right moment. Yeah. Now online participants will be able to see it. Okay. And the amazing thing about Gita is it gives full stop solution rather than a comma. This is the beauty of Gita. Krishna says in the Gita, after knowing this wisdom, there is nothing else to be known. So here everything comes to a full stop. And if we know Gita, then nothing remains to be known. Okay. Now, my question to all of you, as I said, this is going to be a discussion. What is everyone searching for? Or specifically, what you are searching for in your life? आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं life में? Everyone can answer. Yes. Stability. Okay. अभी सोचा नहीं क्या चाहते हैं जो मिल जाए अच्छा लगता है ओके यस हैप्पीनेस गुड यस हैप्पीनेस यस हैप्पीनेस Purpose of life. पर्पस ऑफ My लाइफ life. अच्छा पर्पस जानना चाहते हैं लाइफ का ओके गुड बिकॉज हैप्पीनेस खुशी चाहिए हैप्पीनेस चाहिए सेटिस्फेक्शन चाहिए गुड About myself, why am I here You want to our know. planet, yeah reason, everything. you want to know So about all of many- this so many questions, but I think throughout the session we'll get For all sure. the answers. For sure. Even in just first module, आपके 90% of the questions will get answered. This is my guarantee. And if it is not so, then you can ask also. And then पूरे गीता में तो और डिटेल में हो जाएंगे आंसर. So yeah, very interesting. You want to know about everything. Knowledge. Purpose. Want to explore more. Okay. Ultimately, see, most of you answered that we want happiness. है ना? हमको खुशी चाहिए. And even if someone is looking for stability और अभी पता नहीं कि क्या चाहिए और आपको पता है कि मेरे को ढूंढना है और जानना है बट उसको जब हम और डिटेल में जाएंगे ना when we narrow it down we'll come to this one word answer that is happiness. हम पर्पस जानना चाहते हैं क्यों क्योंकि पर्पस पता चलेगा तो उस पर्पस के हिसाब से वर्क करेंगे एंड देन विल गेट दिस हैप्पीनेस. स्टेबिलिटी चाहिए क्यों क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो खुशी नहीं मिलती कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम नहीं चाहिए इसलिए स्टेबिलिटी चाहिए है ना. स्टेबल मतलब या पीस इट मींस हैप्पीनेस. लाइक फॉर एग्जांपल दिस चेयर इज स्टेबल यू आर सेटिस्फाइड सिटिंग इन दिस चेयर. अगर कोई चेयर पे बैठो और उसका एक पैर टूटा हुआ है तो हल्का सा यहाँ बैलेंस हुआ इट इज लाइक दिस यू विल नॉट बी हैप्पी. बैलेंस नहीं है. सो बैलेंस होना जरूरी है क्यों क्योंकि बैलेंस से हैप्पीनेस मिलता है. Balancing or stability is not the goal of life. Goal of life is happiness. Not in just human beings, my dear friends. In each and every species, everyone is looking for just happiness. हाथी से लेके चींटी तक, मछली से लेके पक्षी तक, इंसान में भी गरीब से लेके अमीर तक, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक, काला हो गोरा हो, मेल हो फीमेल हो, everyone is searching for this one thing that is happiness. In Vedanta Sutra, it just not comes like this only. Everything is there in the scriptures. In Vedanta Sutra, it says, what is the nature of every living entity? Anandamayo Abhyasat. Can you repeat after me? You can write it. It is very important. What it says? Anandamayo Abhyasat. The nature of every living entity is to be always in a blissful state of existence. हमेशा हर एक जीवात्मा खुश रहना चाहता है. That is our by default position. Okay. But ये happiness मिलता है क्या बड़े आसानी से? नहीं मिलता ना? Here you can see in this video.
काइंड ऑफ सेम कंडीशन वी आर इन, नहीं? इतना हाथ पैर मारा, इतना मेहनत किया किस लिए? आईआईटी में आने के लिए। सोचा यहाँ आके मजा मिलेगा। एंड जस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर यू सी हाउ मिजरेबल इट इज। बेचारा वो फर्स्ट ईयर का बच्चा, वो सहन ही नहीं कर पाया। नो, ही इज लाइक ओके लेट अस, very difficult. Nowadays how students, after enduring so much, how much their parents suffer. They give so much of money, they invest so much of time and energy. After coming in such a good institute, still they do such things. Anyway, so we are searching for happiness. Everyone tries to find happiness. बचपन में फुग्गे में दौड़ते हैं, बड़े होके तो खेल खिलौनों में, साइकिल वगैरह में, और बड़े होते हैं तो स्पोर्ट्स में देखते हैं। चीजें बदलती जाती हैं, गोल रिमेन्स द सेम। अभी तो बाहर स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है, सारे तो मोबाइल में हो जाते हैं, पबजी, फीफा, एवरीथिंग इज देयर। यस। एंड देन उसके बाद कॉलेज में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो देन इमीडिएटली वी फाइंड इट इन द पार्टनर। कॉलेज में आते से ही पूरा माहौल ही बदल जाता है, भाई इतनी मेहनत करके आए हैं, वी डिजर्व समथिंग। एंड देन उसके बाद समझ में आता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, पैसा होगा तो सब अच्छा होगा। सो फर्स्ट लेट अस एंडेवर फॉर द जॉब, and then we started working for the money, and then we find happiness in the money, and at last when we are retired, then we try to find that same happiness in our grandchildren's, but somehow or other कुछ तो गड़बड़ है, जो चाहिए वैसा नहीं मिलता है in different stages of life. Am I right? Yeah. So not just that, people try different fashions, to be happy. They do all kind of these things. People try daredevil acts, अपनी लाइफ को जान पे लगा के they do this. अभी ये पैराशूट जंपिंग करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि पैराशूट खुल ही जाएगा हर बार, कभी अटक भी सकता है। और चलो खुल भी गया तो ये व्यक्ति भी पेड़ पे अटक सकता है, ग्राउंड पे जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, बट स्टिल लाइफ को हम दाव पे लगा देते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। नॉर्मल लाइफ सेम वही, कंपनी में जाना, 9 to 5 जॉब करना, वीकेंड्स पे घर में थोड़ा सोना, मजा नहीं आता उसमें, वेरी मोनोटोनस हो जाता है। तो पीपल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। देन स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ स्पोर्ट्स देखते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, फुल ऑफ फन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम इन द सेशन, अभी भी दे आर enrolled, they have enrolled I think for this course also. They said sir अभी आईपीएल चल रहा है, so now please be conscious of the timings of the session. Please don't extend it. So sports में हम देखते हैं खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं ना, नहीं मिलती तो काफी बार तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब श्रीलंका लॉस्ट द वर्ल्ड कप इन 2011, इंडिया से जब हारी थी, at that time 6 people in Sri Lanka committed suicide. Why? श्रीलंका लॉस्ट द वर्ल्ड कप, उनका क्या पैसा लगाया था उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ हार गई, इसी बात पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। So such intense desire to be pleased by such things is also there. Then we find same thing in intoxicants and parties also. बॉलीवुड में सॉन्ग है ना, पीने का शौक नहीं, आगे क्या है, नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, यस, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दैट इज फेमस सॉन्ग बाय अमिताभ बच्चन जी। सो देन पीपल स्टार्ट ट्राइंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशंस। इसमें लिखा होता है सिगरेट के पैकेट में, स्मोकिंग किल्स। वो पढ़ा लिखा बच्चा आईआईटी में आया है, ऐसा तो ना इंग्लिश नहीं आती होगी उसको, उसमें इतना बड़ा लिखा है कैंसर होता है इससे, वो तब भी लेके उसको कूल। यू आर नॉट कूल, यू आर फूल। लोग पढ़ने के बाद भी वही कर रहे हो तुम। Yes. So people do such kind of things. Why? Because there is some sense of happiness, not the happiness, but some sense of happiness, and therefore they do this. So currently our definition of happiness is this. हम अभी happiness का definition क्या बना के रखें? I hope you will agree with this. So this is our definition. First, we find happiness in eating. ज्यादा से ज्यादा खाने मिले, अच्छे से अच्छा खाने मिले, जो मैं चाहता हूं वैसा खाने मिले। Yes. Then we find happiness, that मैं खुश हूं भैया। बट हाउ मच वी कैन ईट? पहली बात तो जो हमें चाहिए होता है हमेशा वो हमें मिलता नहीं है, और लेट से कभी मिल भी जाए, शादी में जब जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, सो देन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द टंग एंड बेली। टंग सेज मोर एंड मोर, बेली सेज नो बाबा अभी हो गया, मैं फिल हो गई, इससे ज्यादा अंदर जाएगा नहीं। एंड स्टिल इफ यू फोर्स, देन नेक्स्ट डे वी नीड टू सफर। You will maybe having vomit or constipation or something. So eating, although it gives us pleasure, but cannot be done unlimited. Next is sleeping.
सोने में कितना आनंद आता है, नहीं मजा आता है कि नहीं आता सोने में? व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरा एक दोस्त था, वो फ्राइडे नाइट को सोया और संडे मॉर्निंग उठा, ट्रूली स्पीकिंग, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा भाई इतना कोई कैसे सो सकता है? तो बीमार है, डॉक्टर को दिखा, कहता है तुझे क्या पता सोने में क्या मजा आता है? मैंने कहा पता भी नहीं करना, तो ऐसा कोई सोता है क्या? दो दो दिन सो रहा है, यू नो। सो स्लीपिंग में भी आनंद आता है, इसलिए पीपल जस्ट स्लीप, फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। कुछ करना नहीं है तो भाई कुछ करेगा नहीं, यार सोऊंगा अभी तो, 2-4 घंटे सोऊंगा। सो स्लीपिंग में पीपल हैव दिस प्लेजर, बट हाउ मच वी कैन स्लीप? कुछ समय बाद पीठ दुखने लगेगी। हाँ, वी नीड टू वेक अप, वी हैव सम वर्क टू डू, some assignments to give, some projects to be done. Need to wake up. We cannot sleep unlimitedly. Yeah, so sleeping, although it gives us pleasure, that is our happiness, but it is also limited. Then mating. Mating is happiness. To have a partner, to have someone to share our heart with. कोई ऐसा हो जिसके साथ हम हमारा दुख दर्द शेयर कर सके, जो हमारे साथ रह सके। पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री इसी पे चल रहा है, मोस्ट ऑफ इट। सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स कौन से होते हैं? डीजे सॉन्ग्स कम ही होते हैं, वो तो जब पार्टी वाले मूड में ही सुनते हैं। डेली कौन सुनते हैं? डेली सॉन्ग्स तो लव वाले सॉन्ग्स ही होते हैं। हाँ, सो लाइक दैट, मीटिंग इज वन ऑफ द थिंग विच गिव्स द ग्रेट प्लेजर टू ऑल ऑफ अस। एंड देन डिफेंडिंग, टू बी प्रोटेक्टेड। यस, टू बी प्रोटेक्टेड, टू हैव अ पोजिशन इन लाइफ वेयर वी फील सिक्योर। इसलिए लोग घर बनाते हैं, अच्छे सोसाइटी में घर लेते हैं, उसमें ताला डालते हैं, यू नो, अच्छे से सेफ फील करना चाहते हैं वहां रहकर। छोटा परिवार सुखी परिवार। We want to feel safe, we want to defend ourselves. So these four things, society says if you have a good opulence of eating, अगर आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा सकते हो, if you can sleep in nice beds, nice bedding, if you can book some hotels and can sleep there in a comfortable environment, if you can have a good partner to mate with, you know some partner who is having a good position in the society, he or she is also beautiful, earns good money, then you are happy, and if you are able to defend yourself in the society, ये चारों चीजें आपके पास जितनी ज्यादा से ज्यादा हैं, यू आर कंसिडर्ड अ हैप्पी पर्सन। एम आई राइट? एम आई राइट? जो हम पैसा कमाते हैं वो किन पर्पस के लिए यूज करते हैं अल्टीमेटली? यही चार है ना, अच्छे से अच्छा खा सके, अच्छे बेडिंग, अच्छे सुकून की नींद सो सके, मेटिंग अच्छा हो, दिस ना, अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, इन हिंदी दे से। यस, एंड देन डिफेंडिंग, अच्छी जगह घर हो। इन चार चीजों के लिए वी आर endeavoring so much. That is our definition of happiness. But let us see, let us analyze a little bit more. Animals also eat. That is there in animal kingdom also. Yeah. हम इतना एंडिएवर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए? 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाए। Am I right? कितना एफर्ट डालते हैं। दिस एलिफेंट ईट्स 100 kg a day। कोविड में भी इतना ही खाता था, अभी भी इतना ही खा रहा है, और वो कोई टीसीएस में, कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं करता, उसकी कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल डेली इट इज ही इज ईटिंग दिस मच हैप्पी। हम उससे compete भी नहीं कर सकते, हमारे तो 250 ग्राम में पूरा फैमिली खा लेती है, वो 100 किलो अकेला खाता है। हाँ, सेकेंड, स्लीपिंग। पोलार बियर्स एक बार में 6 महीने तक सो सकते हैं, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। हम आसपास भी नहीं आ सकते उनके। हाँ, कुंभकर्ण कैन गिव कॉम्पिटिशन, दैट टू आल्सो ही गॉट दिस श्राप, कर्स बाय, he was asking for the benediction but it became a curse. So and then mating also. Mating में भी अगर देखें तो ह्यूमन बींग्स एक साल में एक बच्चे को ही जन्म दे सकते हैं, but in animal kingdom we see they can give birth to tens and hundreds of children in 1 year also. मच्छर जो है कितने तेजी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिशेस दे कैन गिव hundreds of eggs in once, so in mating or in expanding their species they are way better than us. Pigeons can indulge in sexual activity 60 times a day. That is way beyond capacity for any human being. Although it is being glamorized like anything in the media, but we are not able to do it in comparison to animal kingdom. And then defending. Defending में भी अगर बात करें तो क्या जानवरों से हम टक्कर ले सकते हैं? कैन वी गिव देम कॉम्पिटिशन? देखो अभी हमारे पास औजार हैं,
हथियार हैं जिनसे हम उनको टक्कर दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड टू हैंड फाइट। मोहम्मद अली विथ कोबरा, 1-1 match, who will win? 1 second, Muhammad Ali will be knocked down. He will be in the hospital. You know, there cannot be fight at all. अरे उसकी क्या बात करें हम, कोबरा की। एक मच्छर केपेबल होता है हमें बेड पे लेटाने के लिए, और इवन डेथ के फेस टू फेस कराने के लिए। डेंगू, मलेरिया, वी hear about such things. Yes. So in defending also we are not at all good. So ये चारों चीजों में हम देख रहे हैं जिनमें हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, जिसको डिफाइन किया जा रहा है कि इफ यू हैव दिस इन गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी यू विल बी हैप्पी। बट हियर इन द एनिमल किंगडम वी सी दे आल्सो हैव इट way better than us without having so much of inconvenience like us, so they must be more happy than us. Yeah, but now you can argue, सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि जानवर हमसे बेटर कर रहे हैं? हाँ, हमारा खाना और जानवर का खाना सेम थोड़ी ना। वो तो कुछ भी खा लेता है, कहीं से भी खा लेता है, जो मिल जाता है वो खाता है। हम तो सोफिस्टिकेटेडली खाते हैं ना। वी कुक इट, देन वी ईट इट, एंड वी सिलेक्ट आवर फूड कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। ऑल्दो सही बताऊं तो ह्यूमन बींग्स आर लेस सिलेक्टिव, एनिमल्स आर मोर सिलेक्टिव। This is what is going on currently. But yeah, still we can see this. So, okay, hear this word rightly. You can also write it down if possible. Animals do eating, we do sophisticated eating. ठीक है? Second, sleeping. जानवर कहीं भी सो जाता है, हम बेड्स पे सोते हैं, क्लोज डोर्स में सोते हैं. Yeah, we have these fans and ACs to give us a suitable environment to sleep. Okay, so they are sleeping, we are sophisticatedly sleeping. ठीक है? Third point, mating. They can mate anywhere. We mate again sophisticatedly in the closed doors at a particular time in the day or in the month. So mating also, they do mating, we do sophisticated mating. Is it okay? And the fourth thing, defending. They defend by the natural equipments which are given to them, like कुत्ते को दांत दिए हैं, सांप को जहर दिया है, हाथी का वेट ज्यादा है, शेर के पास ताकत ज्यादा है, उसके पास भी दांत है. So they defend by these things. We defend by artificial means. So they do defending, we do sophisticated defending. Got it? So now we can write two equations, please, if possible, or you can do it in your mind if you feel that it is okay for you. So human beings are equals to sophisticated eating plus sophisticated mating plus sophisticated sleeping plus sophisticated defending. Animals are equals to eating plus sleeping plus mating plus defending. These are the two equations. Let us do basic algebra. और ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं? Sophisticated. What is remaining? Sleeping plus eating plus mating plus defending. सेकेंड इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू? मैंने नहीं बोला, आपने बोला अभी। ऐसा मतलब सर पहले सेशन में बुलाया और जानवर बोल रहे हो? आई एम नॉट सेइंग इट, यू योरसेल्फ इज सेइंग. Human being is equals to sophisticated animal if he is doing just these four things and searching for happiness in just these four things in a sophisticated manner. But are we just like an animal? अभी sometimes it happens. Last time जब मैं ये session दे रहा था, same session, one dog came in. At this moment only he came in and we are discussing, okay, so ये कुत्ता और हम क्या सेम है? All of them says, सर क्या कंपेयर कर रहे हो आप? But I said, but he is way better than us in doing these four things. वो इतना स्ट्रगल भी नहीं करता है. Then they understood the point. Yeah, we are meant for something different. We are meant for enjoying some higher pleasure which we are looking for. So आप कोई बोल सकता है उनके फ्रेंड्स नहीं होते. नहीं भैया, उनके ही फ्रेंड्स होते हैं. उनको वो भी फन करते हैं, उनकी भी फैमिली होती है. They also take care of their cubs and calves and all. So this is not an argument which can be taken. And in eating, sleeping, mating and defending, ये चारों एक्टिविटीज जानवर और इंसान में कॉमन है, और इन चारों में जानवर हमसे काफी ज्यादा बेटर है. नॉट जस्ट दैट, बात यहीं खत्म नहीं होती. क्वेश्चन है कि ठीक है, ये चारों में तो हम सेम है. व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस? Yes. You can pick
मतलब जो थिंक करते हैं उसमें वो एक्शन भी ला सकते हैं, हम्म। हंस सकते हैं, हम्म। जान Oh, in that dolphin can compete us. डॉल्फिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है, बहुत फन है, फन करती है वो। एंड नो देयर इज आल्सो वन एनिमल, उसका नाम ही कुछ ऐसा रखा है लाफ करके। वो उसका फेस देखेंगे, इट इज ऑलवेज स्माइलिंग, सो ब्यूटीफुल स्माइल। रैबिट जैसा दिखता है, दो दांत हैं आगे उसके, इट लुक्स लाइक दिस इज स्माइलिंग ऑलवेज, सच अ बिग स्माइल, ईयर टू ईयर स्माइल। इंसानों के चेहरे पे नहीं दिखती ऐसी स्माइल। So sorry to sorry for that, but yeah, thinking point of view से अगर बात करें, that we can think better in that also. If we see in the animal kingdom, चालाकी की बात करते हैं तो पहला नाम किसका आता है? लोमड़ी का, फॉक्स का। In animal kingdom also there are species they which are very advanced in thinking, in regional thinking, and intelligence. They are even better than human beings. आईक्यू के टर्म्स में भी अगर बात करेंगे, देयर आर सम स्पीशीज जो अपना वेब इतने तरीके अच्छे तरीके से बनाते हैं, जो अपना घर इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, एक सीजन में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सीजन चेंज होगा तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। सो देयर आर स्पीशीज, दे ऑल्सो नो, दे ऑल्सो प्लान बिफोर हैंड। वो कैलेमिटी आने से पहले वो प्लान कर लेते हैं। सो इंटेलिजेंस तो उनके पास भी है, इंटेलिजेंस वो लैक नहीं करते हैं, दैट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी टेकन। But if we see, in different activities also, like eagles, they have eagle eye. Horse, they can run way faster than any human being. Dogs can smell better. Elephants can lift any load. And polar bears can sleep, and cuckoo can sing like anything. No human being can compete with cuckoo. So अगर दूसरी चीजों में भी देखें, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के अलावा, उन सब में भी कोई ना कोई स्पीशी हमसे आगे है। ओके, सो नाउ as I said, in eating, sleeping, mating, and defending, animals have rational power and intelligence, and animals are even better than human beings. Just 1 second, important call है। Hare Krishna Prabhu. I will sound in between. And not just that, rational power और intelligence तो है ही उनके पास, and इन चारों एक्टिविटी में ये हमसे बेटर है कि नहीं? और डू यू ऑल अग्री विद दिस? अभी इतना हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं जो भी हमने डिस्कस करा, तो आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन, इवन चैलेंजेस आल्सो विल टेक इट। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। सो वन कैन से, बट सर वी हैव दिस टेक्नोलॉजी जो कि जानवरों के पास नहीं है। या ये तो उनके पास नहीं है, दे डोंट हैव फोन्स, monkeys don't have phones, they don't have these laptops, they don't have these smart watches, such rooms, जिनमें एसी वेंटिलेशन लगा है, गर्मी में आपको बिल्कुल ठंडी जैसा कर दें, एंड ठंडी हो तो फिर टेम्परेचर एडजस्ट करके वापस नॉर्मल कर दें उसको। सो सच थिंग्स एनिमल्स डोंट हैव, वी हैव इट। या इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट ना? कैन बी टेकन और नॉट? ओके, बट सी what is happening due to this technology. We need to see it with an open eye, not by just closing our eyes. Oh no, we are having such good advancement. Let us see, let us discuss it. We are not against technology. I'm also a person working in a software company. You all are from tech background. We know what science is doing, how it is contributing to the world, but we can also not hide the reality that we need to see with the open eye. Does material advancement provide solutions to the problems? Please answer. Does it give? There are many stupid people who does this kind of stuff. Hmm. Like, I can say a lot of things, Mhm. but here there are intelligent people and there are some stupid people. Yeah. We mix them up, then we will see chaos. Yeah, that's perfect point actually. There are people who are cautious, who know that whatever we are creating, how it is going to benefit or harm the world. At the same time, there are people who don't care about these things. They just want their personal benefit. They are selfish in nature, and they can do anything and everything to satisfy their own needs. Yeah, खुद के भले के लिए, खुद की अच्छाई के लिए, खुद के पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। But if we see in the world today, what is happening majorly,
due to science. Material science gives us the solution. Yes, it does. Definitely. No doubt. पहले हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, मैक्स टू मैक्स वी कैन हैव बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, which used to take a lot of time. But now we have vehicles. We can quickly go from one place to another. एरोप्लेन्स आर देयर जहां पे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो है वो आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप एक दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। सच क्विक फास्ट traveling we are able to do. Yes, but the problem is it gives us only temporary relief, and जो solution मिलता है उससे और बड़ी बड़ी problems खड़ी हो जाती हैं, because it is not being produced by keeping the ultimate goal in the eye. When we forget that, then this kind of things happen. अभी vehicles तो इतने सारे बना लिए, now we have the issue of traffic, we have the issue of pollution. You know, in the metro cities like Pune, Bangalore, Delhi, they say you cannot even breathe openly. If you do it, अगर आप 12 घंटे टू व्हीलर लेके अगर निकल जाएंगे दिल्ली में, तो 12 घंटे में आपके नाक में से 2 केरोसिन की गोली के बराबर कार्बन निकाला जा सकता है। इतना आप इनहेल कर लिए। Pollution, just imagine. Pollution bars are way higher in these cities. Yes, so material advancement provides solution to these real problems. No, it does not. 1990 में सीन कुछ इस तरीके से था, 2008 में आते आते कुछ ऐसा हो गया। एडवांसमेंट तो हुआ, बट थोड़ा बस यहाँ से यहाँ चला गया वो, है ना। So yeah, it gives solution. Huge information is there, quick communication is there, global connectivity is there, but people are suffering from health issues. You know, stress, anxiety, depression is increasing like anything in the world. World Health Organization claimed it in the World Conference. Mental health issues are becoming the prominent reason of concern in the world nowadays. हर 5 में से एक व्यक्ति सीवियर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार है इन द प्रेजेंट मोमेंट पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन वन कंट्री और अनदर. पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इम्पर्सनलिज्म. बाजू में कोई बैठा है उससे बात नहीं करते हम, फोन पे लेके जो 2000 किलोमीटर दूर है उससे बातें कर लेंगे घंटों घंटों तक. एंड वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो उससे कैसे बात करनी है फिर नहीं हो पाती, उसके साथ फिर बड़ा इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप होगा. क्यों? क्योंकि हमारी बातें अब ज्यादातर कॉल पे, व्हाट्सएप चैट पे ही हो पाती है. यस, दैट इज काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म वी आर हैविंग. पीपल लिव इन फ्लैट्स. बाजू वाले फ्लैट में किसी ने सुसाइड कर लिया, देवर आस्किंग यू नो द अदर पर्सन, जैसे भैया हमने तो देखा ही नहीं, वो 6 साल 7 साल से आसपास ही रह रहे. Such kind of impersonalism we are suffering from. And not need to say that, you know, there's a major concern in the society, for youth especially. You know, such kind of content is there which is disturbing to the mind and the consciousness, and people are not able to deal with it. Yes, so we want nature. Yes, we want nature, we want to be close to nature. आप देखेंगे अगर चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं आफ्टर द सेशन 10 प्रोमिनेंट लोकेशंस टू स्पेंड आवर हॉलीडेज. सारी की सारी 10 प्लेसेस में क्या है, सिर्फ अच्छा नेचर सीनरी है, अच्छे ट्रीज हैं, लेक्स हैं, वाटर है, एयर है. बट व्हाट वी आर क्रिएटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी वांट. वी वांट टू बी सोशल, वी वांट गुड फ्रेंड्स, वी वांट समवन टू शेयर आवर हार्ट विद, कोई हमारी सुने, कोई हमारे साथ रहे, कोई हमें समझे. बट वी जस्ट हैव ऑन द नेम ऑफ सोशल, being social, we have just social media where we have Insta, WhatsApp, Twitter, you know, whatnot. But we people have completely forgotten how to be social. Now, one of the major issue in the world, आपको शायद पता हो या नहीं, loneliness. People are suffering from loneliness. अकेलापन खा रहा है उनको. क्यों? उनको ये चलाना नहीं आता ना, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर. आता होता तो वो नहीं खाता ना. जो ये यूज कर रहे हैं उनको खा रहा है. जो गांव में बैठे हैं जिनको नहीं है इन सब का यूज, दे आर क्वाइट हैप्पी. So we are not against it. We are just again to remind ourselves. We just want to open our eyes where we are going. Yes. We want to be healthy. कोई है ऐसा जो बीमार रहना चाहता है? हेल्दी रहना चाहते हैं ना? But what is happening? Every single day we are getting newer and newer diseases. हमारी बॉडी इतने वीक हो गए हैं, हर चाहे जब हम बीमार पड़ जाते हैं. अभी कोविड आया, पूरे दुनिया का इम्यून सिस्टम हिला दिया. Yes. Where these new diseases are coming from? फूड का क्वालिटी कम हो चुका है, उसमें सारे जो प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्वांटिटी कम हो चुका है.
अच्छा फूड ही नहीं मिलता है मार्केट में, जंक फूड इज मोस्टली अवेलेबल और पैक्ड फूड इज अवेलेबल विच इज नॉट वेरी मच हेल्दी, एंड देयरफॉर डिसीजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं हमको। ये सब हो रहा है, वी आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद अ ग्रेट स्पीड, that is what we need to open our eyes for. So there is a video, I hope you will watch it with an open mindset. As I discussed it again and again, I'm discussing it again and again and will not get hurt by it. It's just a reality. We may not create life, but we can take it away. With jet planes and bombs, we'll show you our sway. Japan was just a test, a demonstration of our might. You should be grateful, we saved you from the night. We're the scientists, your saviors and guides. We'll keep you distracted with gadgets and pride. We may destroy the planet, but you won't even care. You'll be too busy staring at your smartphones in the air. We gave you cars and air conditioners to keep you cool and fine. Wi-Fi and smartphones to keep your minds in line. You won't worry about the planet or the future we'll make. You'll be too busy swiping through the digital haze. We're the scientists, your saviors and guides. We'll keep you distracted with gadgets and pride. We may destroy the planet, but you won't even care. You'll be too busy staring at your smartphones in the air. We gave you cars and air conditioners to keep you cool and fine. Wi-Fi and smartphones to keep your minds in line. You won't worry about the planet or the future we'll make. You'll be too busy swiping through the digital haze. We have speed, but we have lost the direction. And there was one person, he was traveling in the train, and एक दूसरा व्यक्ति उसके बाजू में बैठा हुआ था. He asked him, "So, my dear friend, where are you coming from?" He said, "I don't know." रमेश यार ट्रेन में बैठा है, इसको पता नहीं कहाँ से आया. He said, "Let us not judge immediately. Let me ask one more question." So he asked, "Okay then, so where are you going? What is your destination?" And he replied, "I don't know." ये तो आया कहाँ से पता नहीं, जा कहाँ रहा है पता नहीं, तो क्या ट्रेन उड़ाने का इरादा है क्या इसका? तो क्रिमिनल है क्या है पता नहीं. तो वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था. ही थॉट लेट मी आस्क जस्ट वन मोर क्वेश्चन. So he asked spontaneously, "So then what are you doing here? You don't know where are you coming from, you don't know where are you going, so what are you doing here?" And he replied, "I don't know." This is the scenario with the 99.9999% people in the world. Where we came from, we don't know. Where we are going in life, we don't know. What we are doing currently in our life, don't know. Just living mechanically. क्योंकि सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं. सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे. This is the speed without direction. We are going very fast. 2G, 3G, 4G, 5G, and now 6G is in testing. From Koila train, we are now to bullet trains. Yeah, so much of speed. But where is the direction? Without direction, we'll be able to reach anywhere. पता ही नहीं जाना कहाँ है तो कैसे जाएंगे? Therefore, it is very important to know the direction also. So despite all this advancement, unfortunately, modern day humans are dissatisfied, full of anxiety, stressed, depressed, and above all, what is this?
Do we agree? Do we agree? They are unhappy. They're not happy. They're not satisfied. Yeah. So that is the thing. So here is one more video, but I don't have the time to show actually in 2023 only what all these incidents happened, throughout the world. How many people died, how many people suffered. And this is just about natural disaster, not about the war which happened in 2023. Major wars took place in 2023. So apparently I don't have the time, so I'm just skipping it because we are already over time. मैंने सोचा था थोड़ा सा वो करिकुलम शेयर करने का एंड इट टुक अ लिटिल बिट मोर. वी स्टार्टेड टिल एट 6:30. जनरली एक सेशन में 1 घंटा तो लग जाता है टू शेयर. So I hope you'll be comfortable if I can take next 10 more minutes, 10-15 minutes or so. Okay? Thank you very much. So now the question is, which remains to be answered, how are we special? Technology is not solving the problem, it is just increasing those. Even though on the other hand, it is making those basic things जो कि जानवर भी अच्छे से कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो गई है. खाना अच्छा मिल नहीं रहा है, रात में नींद आ नहीं रही है. American statistics, 70% of the richest people of America are not able to sleep without sleeping pill. सोना नहीं हो पा रहा हमारा. Mating, people are not able to produce children. That is also becoming one of the more issue in the world nowadays. बच्चे पैदा नहीं हो रहे. जानवरों की खानदान चल रहे हैं उनके. कुत्ते का एक कह सकते हैं जनरेशन यहाँ चल रही है इस गली में, दूसरी जनरेशन दूसरी गली में चल रही है. But humans are suffering to give birth to children. Mating, we are failing in that. And defending, yeah, we are defending. But पहले से अभी लाइफ स्पैन कम हो गया है कि बढ़ गया है? एवरेज लाइफ स्पैन अभी 60 साल का हो गया है. हम में से कितने जिन्होंने हमारे दादा दादी को 80 के ऊपर या 100 तक देखा है या अभी देख रहे हैं? या so in just 1 or 2 generations before, this is good lifespan, but now it is came to 60 only. Diseases, पहले कोई बेयरली बीमार होता था, पूरे गांव में 8-10 गांवों को मिला के एक जिले में एक अस्पताल होता था. आज जहां मैं रहता हूँ भोपाल में, वेयर देयर इज माय होम, वहां पे करोद करके एक एरिया है. वहां पे काफी क्राउडेड एरिया है. वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में देयर आर मोर देन 50 हॉस्पिटल्स एंड एवरीवन इज पैक्ड. एवरी हॉस्पिटल इज पैक्ड. सो मच डिसीज इज देयर इन द सिटीज. सर्दी खांसी बुखार तो नॉर्मल, तो वो तो हर जगह होता ही रहता है. वो तो हम जीना सीख गए उसके साथ, तो ये तो चलता है ना. हाँ, gas leakage. या भोपाल में गैस लीकेज हुआ था. दैट वाज अ डिजास्ट्रस थिंग हैपेंड. many people died. Now let us discuss how are we special, क्योंकि इससे तो और समस्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है. But we are definitely special. We are not like animals, or we are not animals. So are we interested to know how are we special, or anyone want to suggest something कि आप कुछ बोलना चाहते हो इस पे जो आप नहीं बोल पाए हो अभी तक, कि हम कैसे स्पेशल हैं? क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स को डिफीट कर दिया है. If your argument is genuine, I'll take it. I'm not here to defeat you. We are just discussing. Anything, or should I move forward? चलें आगे? So let me share with you. हमारी पढ़ाई किससे शुरू हुई थी? सबसे पहले हमने क्या सीखा था जब हम पढ़ना शुरू किए थे? तो नंबर्स एंड इंग्लिश में, हाँ, अल्फाबेट्स ना. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट. सो ABCD सीखा था सबसे पहले. दैट वाज आवर बिगिनिंग ऑफ द मटेरियल एजुकेशन. सो आज स्पिरिचुअल एजुकेशन का हम बिगिनिंग कर रहे हैं, तो ABCD से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना. सो दिस इज द ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. ए फॉर एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ए फॉर, B for bliss, C for choice, and D for determination to do ABC. These are the 4 things which make a human being different from anyone. Please note it down very carefully. ये 4 ही चीजें जो कि इंसान को जानवर से अलग बनाती हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी का ग्रुप ऑफ पीपल का मत नहीं है. इट इज कमिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर. द रेफरेंस आई विल शेयर एट द एंड ऑफ these 3-4 slides. So let us discuss it one by one quickly. So ability for higher inquiry. Human life is given to inquire. हायर इंक्वायरी मतलब पहले हम पूछते थे 2 + 2 कितना होता है, अब पूछेंगे sin θ + tan θ क्या होता है.
This is higher inquiry, yes? No, Baba. It is not like that. It is inquiring about higher subject matter of life. What the life is meant for. All these questions which we have discussed in the beginning itself. Many questions are there which we can ask. So if we inquire, then we are promoted to higher life. If we don't inquire, then we are back to normal life, or in spirituality. In the next session itself, we'll understand that we are not this body, we are soul. हम सबको इतना पता तो होगा, but next session में we are going to prove it with so much of scientific facts that we are not this body, we are soul. So we are not human beings in a spiritual journey. We are spiritual beings in a human journey. Yes. So if we don't utilize this opportunity which is given to us, then we'll given back the body of animal species. Why? Because the purpose for which it is given, we are not fulfilling it. As easy as that. आप IIT में आ गए, yes? आप आ गए यहाँ पे एग्जाम देके, you have got the admission, but now coming to IIT is enough. अब यहाँ बैठ के सिर्फ मजे करते रहे, मूवी देखते रहे, गाने सुनते रहे, दोस्तों के साथ घूमने चलेगा, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. I don't know if you have heard about it or not. There is an NFT certificate. You heard it? अगर आपके कुछ 10 बैक लग जाते हैं, वो आप क्लियर नहीं करते एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ NFT नॉट फिट फॉर टेक्नोलॉजी बाय IIT, and then you cannot take admission in any technology institute which is authorized. It means आप आ तो गए एग्जाम क्वालिफाई करके IIT में, बट अगर आप यहाँ यूटिलाइज नहीं करें तो यू विल गो बैक टू द प्लेस वेयर यू वर बिफोर. Similarly, this human life is very real. Shastra says, if we don't utilize it, we'll go back from where we have came to this body. Evolution is there, not of the body, but of the soul. So, inquire about higher principles. Why do bad things happen to good people? If God is one, then why so many religions? Do we make destiny or destiny makes us? So on and so forth. कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Does God exist? Who am I? All these questions will be answered in this course itself. First module mein, as I said, 90% of the questions will be answered, and much more will come in the upcoming sessions when we are going to discuss Gita in detail. B stands for Oh, so you need to leave the session in the middle. You'll not be able to come back again. It was supposed to begin at 6:15. 6:15. Okay, so you 6:50. Well, you already waited for 25 minutes. So they are waiting for you. Yes, I have received two, three calls. You're playing an important role in the club. But it's a habit, not a competition. Competition, okay. So what you can do from here, you can watch the recording, please. Sorry for the delay. Actually, मैं 7 बजे तक कर देता, but वो थोड़ा सा delay हो गया. I'm really sorry for that. So अभी session का recording आ जाएगा group पे. So from here, from this point itself, you can watch the recording and complete it, please. Just 10 minute का और बचा होगा. So 10-15 minutes का जो रह गया है अभी आपका, जो आप छोड़ के जा रहे हो, that you can attend via recording. Or if you can join online, I don't know if it is possible. Yeah. So okay, so then you can attend it, but you can come for Prashadam for sure. ठीक है. So hackathon कितने बजे तक चलेगा? It will last till 11. Oh, so मैं आपके रूम पे भिजवा दूंगा. Okay, you tell me your room number. 404. 404, which hostel? VSB 404. Okay, I'll tell Raghav, he will take. Sorry. No, thank you for coming. Oh, okay. Okay. So it cannot be just 5 to 10 minutes more if I can just go through these slides. Okay. So can you come for Prashadam? So I can't join tomorrow. Join today. I join today. So can we send Prashadam somewhere? आपको hostel में रहते हो? अच्छा. हाँ, he'll bring for you. Okay. Thank you very much for coming. Hare Krishna. So B stands for bliss. So there are different categories of bliss. Scriptures describe 4 तरीके के bliss होते हैं. First is sensual pleasure, that is on the bodily level. That is available for both animals and human beings. As I said, animals are having it more than human beings. And then there is emotional pleasure, which is 1,000 times
सेंजुअल प्लेजर और पार्थिव रस। संस्कृत में इसको बोलते हैं पार्थिव रस, इसको बोलते हैं स्वर्गीय रस। सो स्वर्गीय रस इज 1000 times मोर देन द प्लेजर ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हैं घर में कुछ चीज लिमिटेड हो, एंड लेट्स से अभी गर्मी का सीजन है तो मैंगोज विल कम, ठीक है, घर में 5 मेंबर हैं और 4 आम आते हैं, तो एक मेंबर है जो कि बोलती है कि मेरे को आम बिल्कुल ही नहीं पसंद, आप लोग खा लो। कौन है वो? मदर। क्या उन्हें आम पसंद नहीं है? आम किसको पसंद नहीं है? आम फलों का राजा है, सबको पसंद है। बट शी इज सेक्रीफाइसिंग इट बिकॉज शी इज हैविंग अ हायर प्लेजर, इमोशनल प्लेजर, बाय सीइंग अस ईटिंग द फ्रूट्स। सिमिलरली देयर इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर विच इज ब्रह्मन रस, जो कि 10,000 times होता है स्वर्गीय रस के, मेंटल प्लेजर और इमोशनल प्लेजर के। How we can understand this? Like people like Albert Einstein, those who are too much into the scriptures, people like APJ Abdul Kalam, उनसे पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? बोले मैं 20 साल की उम्र में लैब में गया, 60 साल का हुआ तब बाहर आया। तो समय ही निकल गया शादी करने का। Yeah, so that was his life. And then scriptures describes, Krishna describes in the Bhagavad Gita, spiritual pleasure is like an ocean in which Brahman Ras is a drop. That is the pleasure soul is looking for, because we are not sensual beings, we are not emotional beings, we are not intellectual beings, we are spiritual beings, and therefore we are looking for spiritual pleasure. That is the key, my dear friends. That is where we are lacking. Here you know the secret. If you continue, if you apply it, you'll attain that. C is choice. जानवरों के पास चॉइस नहीं होता है, एनिमल्स एक्ट्स बाय इंस्टिंक्ट। अभी कुत्ता यहाँ पे आएगा, मैं बोलूंगा भाई लेक्चर सुनो गीता का, बोलेगा वाह वाह, बोलेगा मैं कहूँ प्रसाद खा लो, वाह वाह वाह। He'll eat only haddi, bone. He'll not take, he'll not understand this. We have the choice. Human beings have the choice. कोर्स का मेल सबको गया। How many students are there in IIT? I think not less than 1,500. Yeah, 1,500 or so. How many have enrolled? 50. How many are sitting here attending the session? We can count 3, 3, 3, 9, and 2 left, 11. Why is it so? Because we have the choice. Some found it interesting, some found it helpful, some found it, that this is the thing I'm looking for. So they opted for it. They chose this. Others did not. So this choice we have. Animals act by instinct. They don't have freedom. We have the freedom to choose. We have the free will. Okay. And then at last, determination to do ABC. What if we don't explore this potential which is given to us? So then it is simply which we have, 2 equations which we have solved in the beginning. Then a human being is nothing but a sophisticated animal, well dressed in the coat, suit, tie, and everything, working in a prestigious organization, having so many of degrees, but by definition is nothing but a sophisticated animal. That is the reality which we cannot hide. Yeah. So even in the animal society we see कोई rights नहीं होते, suicides नहीं होते, divorces नहीं होते, drug abuse नहीं होते, ये सब अभी prominent हो चुका है human society में. So we need to know that where we are going towards, So यहाँ पे अब वो श्लोक आता है जिसके बेसिस पे अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस किया था. You can write the reference if you like. Here Krishna says in Mahabharata it is being told ahar nidra bhay maithunam cha सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः. आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है. सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम, पशु मतलब जानवर, नर मतलब ह्यूमन बींग्स. आहार मतलब ईटिंग, निद्रा मतलब स्लीपिंग, भय मतलब डिफेंडिंग, एंड मैथुन मतलब सेक्स लाइफ और मेटिंग और एंजॉइंग. धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः. बट धर्म is the thing which is unique, which can be followed by human beings, which animals cannot follow. Those 4 things which we have discussed. Okay. So animal life is like this tractor and human life is like this Mercedes. If we take the Mercedes into the field and start, using it for kheti badi, then people will laugh on us and we will not be happy. Mercedes तो बहुत low चलती है ground में ना. Have you seen Mercedes? Yes.
वेरी लो टू द ग्राउंड। अगर इंडिया में भी ले आएंगे तो वो नहीं चल पाएगी, इतने बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं, हटक जाएगी वो। तो क्या है क्या। तो खेती में तो कैसे ही चलेगी। एंड देयरफॉर जब मर्सिडीज खेती में चल नहीं पाती, वी फील फ्रस्ट्रेटेड। देयरफॉर पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। हैविंग द ह्यूमन बॉडी, लिविंग लाइक एनिमल्स, हाउ वी कैन बी हैप्पी? That is the cause of our stress, depression, and anxiety. Root cause. People are just trying to deal with the symptoms. They are not trying to analyze the root cause. And Gita gives the perfect solution, as I said. It gives the full stop solution. So we are searching for the right thing in the wrong place. That is the conclusion of today's session. ये पर्सन क्या कर रहा है? डस्टबिन में हीरा ढूंढ रहा है. He is searching for the diamond in the dustbin. अभी बाहर डस्टबिन रखा हुआ है. After the prasadam, we'll put the plates there. अगर यहाँ पे कुछ नहीं नहीं मेरा हीरा खो गया, शायद डस्टबिन में होगा. कैसे हो सकता है वहां? इट विल नॉट बी देयर. या सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी आर लाइक द लॉस्ट सन ऑफ अ millionaire father. That is the conclusion of today's session. We are searching for the right thing, and that right thing can be achieved when we connect to that person who can give us that right thing जो हम ढूंढ रहे हैं. Ultimately, we all are part and parcel of Krishna. We are looking for the connection with Krishna, because without that connection we cannot be happy. That is what the goal, that is what the reason of our suffering, which is described in the Gita. Krishna says, mame vamshu jiva loke jiva bhuta sanatana manashishtani indrani prakriti shishtani karshati. These all souls are my part and parcel. Mame vamshu, they are my part and parcel, mere amsh hai. But currently, because they have forgotten me, in this world, in this material world, which is full of suffering, Krishna says in the Gita, this world is dukkhalayam ashashvatam. दो वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया पूरे मटेरियल वर्ल्ड को. क्या है ये वर्ड? दुखालयम अशाश्वतम. ज्ञानालय में क्या मिलता है? क्विकली, वी नीड टू फिनिश इट इन 2 minutes. ज्ञानालय में क्या मिलता है? ज्ञान. पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक. विद्यालय में क्या मिलती है? विद्या. मदिरालय में क्या मिलता है? नहीं, जाना नहीं, वो गलत जगह है. तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख. कृष्ण इज कॉलिंग दिस वर्ल्ड इन गीता इज दुखालय. And then one can argue, sir, दुखालय, but we are happy. We also find some happiness in this world. जब हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, हैप्पीनेस मिलता है. जब गर्मी में हम वाटर पार्क जाते हैं, हैप्पीनेस मिलता है. जब दोस्त का कुछ अच्छा हो जाता है, मेरा कुछ अच्छा अचीवमेंट हो जाता है, हम नाचते हैं गाते हैं, हैप्पीनेस मिलता है. मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है. सो कृष्ण इज सेइंग, वेट, सेकंड वर्ड तो सुन लो. अशाश्वतम. whatever is there in this world, it is temporary. दुखालयम अशाश्वतम. First of all, it is full of misery, and whatever little happiness is there, it is also temporary. So why you want to be in this world? Krishna says, just connect with me, and then you can access the realm of complete happiness. Rama, this is one of the name of the Lord, na? Ram. सुना है ना? राम. कोई फॉरेन नेम तो नहीं बोल रहा हूँ. श्री राम, सीता राम वाला राम. राम शब्द का अर्थ डू वी नो? It means an ocean of pleasure. What it means? An ocean of pleasure. Ramante yogino anante satyanandi chidatmani. In the name of Lord Ram, in the personality of Lord Ram, in the qualities of Lord Ram, the yogis find immense pleasure, and therefore they can never leave it. That is what we all are looking for. Here in Gita, Krishna says, last words for today, last conclusion for today. Brahma bhuta prasannatma na shochiti na kankshati sama sarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. Becomes fully joyful. He never laments. कभी उसके बाद वो शोक नहीं करता है. और desire to have anything. और किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा भी नहीं होती कि ये मिलेगा तो ही खुश रह पाऊंगा. It does not convey the meaning that we should not desire for anything. Don't take it in that way. But we are not dependent on anything for our enjoyment. That is the meaning. Because we are fully joyful. Got it? And this is the way a person gets the immense pleasure by associating with the spiritual life
or with Krishna in one word. So spirituality does not stops you from being happy. It teaches you where to find that real happiness. That is the conclusion of today's session. Okay? Many times people feel spirituality मतलब बस मौन धारण करना है, शांत रहना है, उदास रहना है, गंभीर रहना है. That is spirituality. Monk मतलब गंभीर, शांत, उदास. No, it is not like that. Monk matlab happy, truly satisfied, fully blissful. That is the definition given in Gita. Yeah. So with this, we'd like to end our today's session. In the upcoming session, we are going to discuss these 5 topics. Soul, we are going to discuss in the very next upcoming session tomorrow itself. Same timing we are going to have. Tomorrow, it is not going to go like this. Because we started at 6:30, therefore it went till 7:30. Tomorrow we will start at 6 immediately. It doesn't matter who comes, who does not come. I'll come on time, we'll start on time. Until unless some divine arrangement of Krishna happens and I'm not able to reach here on time. Because ultimately भगवान के control में है सब कुछ, But still, I'll try my best to come here on time. We'll start on time. Just be here. And then in the next session, after that, we are going to discuss about Supreme. Does God exist? क्या ये cosmic manifestation जो है वो अपने आप operate हो रहा है या कोई person है जो इसको operate कर रहा है? यहाँ पे Albert Einstein is saying, I believe in an intelligent designer. If I met God, I will ask how you create a universe. Then we are going to discuss about scriptures. What is the importance of scriptures, how they are relevant to the modern age, how to study them, and how to put our faith on them, and the solutions to our never-ending problems. How I can put a full stop to all of my miseries. For that I have came here. Please tell me that. But that will come in the 4th session. Why? Because abhi bata denge to hame faith hoga nahi. First we need to discuss those things. Then we can come to this. It is very step by step gradual process. Yes, अगर बच्चे को नर्सरी नहीं पढ़ाई फर्स्ट क्लास में डाल दिया तो वो समझ नहीं पाएगा फर्स्ट क्लास में जो भी पढ़ा है. First you need to go through nursery KG1 KG2, then you can understand the first class subject matter. So then we are going to discuss in this 4th session about solution, and at last we'll see the practical spirituality, how the sound vibration, the spiritual sound vibration can transform one's consciousness, can elevate the mind, and can help all of us. This Hare Krishna महामंत्र जो हमने सेशन की शुरुआत में चैंट किया था, it is not something, just concocted mantra or something which we need to put our faith on. It is very scientific. It is given in the scriptures that this mantra will help the people in this age, in this modern age, which is given as the age of Kali in the scriptures, to help in their mental problems, to elevate them to the spiritual platform, and to deal with any problem in their life. ये तो scriptures बोल रहे हैं. We have faith in scriptures, but we have little more faith nowadays in science. Yes, in electrical department, in IIT Indore itself, Dr. Ramvilas Pachori sir, who has sent all of you the mail, he has researched on this mantra, Hare Krishna Mahamantra. He made a student chant this mantra, and with all these equipments, he was observing the mental waves. What are the responses which are coming in the brain? And even science proves, even in his research, he proved that by regular chanting of Hare Krishna Mahamantra, a person comes in the relaxed, alert zone. Mind ki different zones hote hain, that I'll share in the next session maybe. So person comes in the relaxed, alert zone, and then he can be very happy, peaceful and focused in his activities also. So I will request all of you, if possible, you can start by today itself. Kal kare so, aaj kare so, ab. So you can start by today itself. Before going to bed today, try chanting this mantra. Mantra is very easy. Chant after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 times chant करते हैं तो एक राउंड कंप्लीट होता है. तो अभी बीट्स शायद हम लाए नहीं हैं, कल आपको बीट्स भी मिल जाएंगे, माला जिसको बोलते हैं. सो देन यू कैन टेक दैट ऑल्सो फ्रॉम अस. 7 to 10 minutes लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में. दैट इज 108 times to chant this mantra. How to chant it, what are the things we need to do to help our chanting, that all will be discussed in this 5th session, last session. But we can start it immediately, because as I said, we are not here just feeding you with lots of information, but we are here to bring some transformation, and that will come by
practicing spirituality, not by just listening spirituality. This is applied Gita course. Yes. So we need to do some activity. पहले हम theory class attend करते हैं, फिर lab में जाके experiment करते हैं, तभी तो result आता है ना. Otherwise, how the result will come? Okay. So summary. Quickly, कुछ questions पूछता हूँ, आपको आंसर करना है. What is the purpose of life? Happiness. Why we are not getting it? क्यों नहीं मिल रहा है अभी? Yes, perfect. Searching for it at the wrong place. गलत जगह ढूंढ रहे हैं. What technology is giving us? Problems. Yes, it is giving us more speed and temporary solutions to our problems, which is creating even more problems. What technology is taking away? It is taking many things away. Direction in our life, it is taking peace away, it is taking happiness away, and it is truly taking the ultimate goal of our life away by making us totally distracted by our gadgets and pride. Yeah. So that is what we have discussed. We are not against the technology. We just need to open our eyes while using it because it is a great weapon. अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुद ही destroy हो जाएंगे. What are the common things between humans and animals? Loudly. First, eating. ठीक है. Second, sleeping, mating and defending. Perfect. मैं आपको एक एक्रोनिम देता हूँ जिससे आप याद कर पाएंगे. सीड. बीज जो है वो कॉमन है इंसान और जानवर को. Seed. S stands for sleeping, E stands for eating, E stands for enjoyment, D stands for defending. Remember this acronym, it will help you. What is the difference between humans and animals? क्या difference है? Spiritual ABCD. Yes. A for ability for higher inquiry, B for blaze, C for choice, and D for determination to do ABC. And in the upcoming session, we are going to discuss who am I. The permanent solution to all our problems is we are lost son of a billionaire father. Just reconnect with the God, and then immediately we'll see miracles will start happening. It is not I am telling just. Previous course में जो अभी participants हैं, they are in a different group. कल उनका session होगा. And after, as I said, this course is completed, this module is completed, first module, we'll merge both the groups. In that, students are continuing from last 1 year. Some are continuing from last 1 semester. Why? Because they are getting the result. They have seen the transformation. PhD students, they are like, sir, we were used to be so much frustrated before coming to the session. We were thinking about quitting the PhD. But after coming to these sessions, after understanding this wisdom and applying it, we got great hope. And we are really very happy. Now these things does not bother us much. I'll not reveal the name. There are 1 or 2 students who are even thinking of doing the same thing which one student has done. But they have completely... How much time will it be? Let's just finish. We'll take Prashadam. So they are just, that completely dropped the idea from their mind and they're continuing in this journey very happily. Okay, so please take to it. We'll discuss further in tomorrow's session, the wisdom. Thank you very much. Hare Krishna. I'm really sorry. Sorry, Will you share Bhagavad Gita? Will you share this recording? this Gita? Bhagavad Gita book, na? Yes, that I'll give you immediately. You can tell me the language, I'll give it to you. Okay. So tomorrow we are going to continue the session at the same time. Thank you very much. I ask forgiveness for the delay. थोड़ा सा मेरा planning गड़बड़ हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. Tomorrow it will not repeat. So please you come on time, I'll come on time, we'll continue. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks to online participants also. Chat. Yes, okay. Online participants were also participating, I think, in the beginning. अच्छा, Q&A तो हमारा हो नहीं पाया अभी. I hope you can ask these questions either through WhatsApp or you can ask tomorrow. Or even during Prashadam or after Prashadam also, I am here only. You can come and we can discuss here. I have time. If you also have, we can discuss. स्लाइड्स चाहिए आपको? ओके, स्लाइड्स मैं शेयर करने का प्रयास कर लूंगा एंड रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगा चैट अपने व्हाट्सएप में. फर्स्ट मनी देन हैप्पीनेस. यस, ओके. वेरी ट्रूथफुल पर्सन युवराज सर. Undeniable power. That is what you are looking for. Okay. Okay, thank you. So let us have. So I'm ending the meeting here. Okay, thank you.